So now the control of cell cycle, regulation of cell cycle. Now the transition of one phase from the another phase, like from G1 to S, S to G2, all this transition is genetically controlled with the help of the cyclin protein and CDK, that is cyclin dependent kinases. So cell cycle is genetically controlled through proteins, that is the cyclin protein, and CDK, that is cyclin dependent kinases. ये जो cyclin dependent kinases है, these are the enzymes, and for the activation of the enzymes there is requirement of cyclin protein. So it means the kinases, they are activated by the cyclin, that's why known as cyclin dependent kinases. अब जो cyclins इस cell cycle की regulation में involved है, they are of two types, that is G1 cyclin and M cyclin. ये G1 cyclin है, ये बनेगा, इसकी जो फॉर्मेशन है वो होगी G1 फेज में, जो M cyclin है इसकी फॉर्मेशन होगी G2 फेज में. फॉर्मेशन होगी G1 फेज के अंदर और डिग्रेडेशन होगा इन दी S फेज. द डिग्रेडेशन विल अकर इन S फेज और M साइक्लिन, इनका डिग्रेडेशन होगा M फेज के अंदर. राइट तो इसका मतलब हुआ कि जो साइक्लिन प्रोटीन है इनका सिंथेसिस होगा G1 और G2 फेज and the degradation of these compounds will occur in S and M phase. So now here I have to discuss how the cyclin and CDK, they are involved in the conversion of one phase into the another one. So I am making the diagrammatic view for cell cycle representing the different phases. So you know that is the longest phase, that is the interphase, और interphase के अंदर भी जो longest phase है that is G1 phase. तो ये मैं G1 phase दिखा रही हूँ. This is G1. Now after the G1 you know there is S phase. So this one is S phase. Now the next one that is G2 phase, and जहां पर division होगी that is M phase. So these are the different phases of the cell cycle. Now in the G1 phase there is formation of protein that is G1 cyclin. तो G1 phase के अंदर protein बनेगा that is G1 cyclin. So let's say this is G1 cyclin protein. ये जो G1 cyclin protein है they will join with the CDK
यस, वो CDK इस एंजाइम के साथ ज्वाइन करेंगे. So let's say this is enzyme. Let's say this is CDK enzyme. और इस CDK एंजाइम के साथ G1 साइक्लिन की ज्वाइनिंग होगी एट द एक्टिवेशन साइट. तो ये हुई ज्वाइनिंग यहां पर G1 साइक्लिन की. जैसे CDK के साथ G1 साइक्लिन ज्वाइन करेगा, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी. सो द इनएक्टिव CDK it is converted into the active state. So due to this joining, so now the inactive CDK it is converted into the active state. जैसे CDK active होगा, this will result in the transition. Yes, this will result in the transition from the G1 phase to the S phase. तो जैसे ही CDK एक्टिवेट होगा, तो इसकी वजह से होगा phase transition, change of phase from the G1 to the S phase, right? Now, at the end of the S phase, जो S फेज है, इसके एंड में अब G1 साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा. यस, इट विल ब्रेक, इट विल डिग्रेड, दैट इज द G1 साइक्लिन. G1 साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा, तो जिसकी वजह से नाउ दी CDK इट विल अगेन टर्न इनटू दी इनएक्टिव स्टेज. तो बात समझ आ रही है? जब तक तो G1 साइक्लिन CDK के साथ अटैच था वो एक्टिव है, पर जैसे G1 साइक्लिन का डिग्रेडेशन होगा, सो नाउ द CDK इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू दी इनएक्टिव स्टेट. And the CDK it is inactive. Now the cell from the S phase it will enter the G2 phase. So you're getting this? At the end of the S phase, now the G1 cyclin they will undergo degradation, due to which the CDK it turns inactive. CDK inactive होगा, so now the cell from the S phase it will enter the G2 phase. Now in the G2 phase, now again there is synthesis of cyclin protein. Now the cyclin protein which is formed here, that is M cyclin. तो इस फेज के अंदर दोबारा सिंथेसिस होगा प्रोटीन का, cyclin ka, that is now M cyclin. These M cyclin they will join with the CDK. Yes, so they will join with the CDK enzyme. जैसे ही cyclin इस प्रोटीन के साथ join करेगा, तो आपको मालूम है cyclin का काम क्या है? It will convert the inactive CDK into the active state. तो दोबारा CDK एक्टिव हुआ, दोबारा CDK एक्टिव हुआ, so this will result in the transition. Transition is there from the G2 phase to M phase, right? Now again at the end of the M phase, now there is degradation of M cyclin. At the end of the M phase, now the M cyclin it shows degradation. M cyclin का degradation होगा, so now the inactive CDK, the active CDK it is converted into the inactive state. CDK will again be inactive. CDK inactive होगा, so now the cell will enter the G1 phase.
M से G1 फेज के अंदर। तो यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है फेजेस का इन द सेल साइकिल, एंड दिस ट्रांजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द two components, yes, two chemicals mainly, that is cyclin protein and the CDK enzymes, that is cyclic dependent kinases. Now here I would like to add one thing कि ये जो M cyclin है ये ज्वाइन कर रहा है CDK के साथ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, yes, M cyclin और CDK, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज MPF, MPF, that is maturation promoting factor। तो ये जो MPF बनेगा, तो इस MPF की बनने की वजह से now the phase transition will occur from the G1 phase to M phase। सेल पहुंच जाएगा M phase के अंदर, where it will perform the division resulting in the formation of the daughter cells। So the regulation of the cell cycle with the help of the cyclin and CDK is very much clear to all of you. So now here I will discuss some more important points related with the cell cycle. So one term which I would like to discuss here, that is antiphase. Now antiphase is the end of G1 phase. It represents end of G1 phase, और इस फेज के अंदर अब जो सेल है इसने abundant energy, abundant material स्टोर कर लिया है। तो G1 फेज का एंड है, तो इस फेज के अंदर abundant energy has been stored inside the cell। तो अगर इस फेज के अंदर, अगर सेल के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन भी आ गई है, देन ऑल्सो द सेल विल शो द डिवीजन। अनफेवरेबल कंडीशन आने के बावजूद ये जो सेल है ये डिवीजन शो करेगा। वाई? बिकॉज द सेल हैज स्टोर्ड abundant energy sources। So even the stress conditions they are present, the cell will show the division, proceed the cell cycle। So antiphase is that part of the G1 phase जहां पर even unfavorable conditions are present, stealth conditions they are present, the cell will show the division। Now after the antiphase, here I would like to ask few questions। So can you tell me वो ऐसी कौन सी फेज है जहां पर DNA पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव होगा? Which phase the DNA polymerase enzyme is active? So I am writing the name of the phases like G1, S, G2, M phase। अब डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, डीएनए डुप्लीकेशन में इन्वॉल्व है, और आपको मालूम है कि डीएनए डुप्लीकेशन जो है वो कौन सी फेज के अंदर हो रहा है? एस फेज के अंदर। सो डीएनए डुप्लीकेशन इज अकरिंग इन एस फेज, सो वी कैन इजिली से दैट दिस एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इट इज एक्टिव ड्यूरिंग दिस फेज, राइट? अब इनमें से कौन सी वो फेजेस है जिन फेजेस के अंदर हुआ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन? यस, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इज अकरिंग इन विच फेज? जब डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, at the same time the centriole duplication is occurring in the cytoplasm. So again the centriole duplication it will occur during the S phase, right? Now
कौन सी ऐसी फेज है जिसके अंदर बनेगा प्रोटीन? यस, प्रोटीन विच विल हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग. यस, सो डीएनए पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, इस प्रोटीन का सिंथेसिस कौन सी फेज में होगा? द सिंथेसिस विल अकर इन द S phase. Yes, it occurs in the S phase. You know the name of the protein, that is histone protein. प्रोटीन का सिंथेसिस तो S phase के अंदर होगा, but the amino acid for the synthesis of this protein, it will occur in the G1 phase. So this point is very well clear to all of you. Amino acid कब बने? G1 के अंदर. और उनका polymerization कब होगा? To form the histone protein, that is in the S phase. So this is all about the different phases of the cell cycle. So in the next class, now I will be starting with the cell division. Cell division discuss करेंगे. In the cell division, I will be discussing the mitosis, that is equational division, and meiosis, that is reductional division. Thank you so much.